Hello, dear students. We have been talking about the gene therapy in the previous lecture, and we have discussed about the approaches of gene delivery methods. And now, in this lecture, we will be dealing with the gene delivery system and the gene delivery methods. Gene methods. There are two methods for gene delivery. One method is virus mediated transduction method, and the second one is non-viral transfection method. And so far as the virus mediated transduction method, viruses actually attack their hosts to insert their genetic material into the genetic material of the host. And this genetic material contains instructions to produce these viruses, as we know. And the host cell will carry out these instructions and produce the viruses. So it is the host cell, which is host cell's machinery used by the viruses in order to produce the viruses. In addition to the instructions producing the components of the virus itself, virus can carry additional genes containing instructions for creating other kinds of proteins. There are three types of viruses which are currently used as vectors in gene therapy. So first is this virus mediated gene therapy. Right now we have three types of viruses which are being used correctly as vectors in gene therapy. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वायरस को इस्तेमाल करते हैं एज vectors to transfer the genes into the host cells. So there are three types of viruses we used, such as there is retroviruses, right? We have adenoviruses, we have adeno-associated viruses. Associated viruses. So simply we can say that through viruses we can just transfer the genes, the desired genes, into host cells, which we have already discussed in the previous lectures, how we create a vector.
there are different types of vectors which we utilize for introduction of the insertion of that gene and then transferring this desired gene into the host cell. That's actually vector mediated transfer. So we can say these are actually vector mediated transfer. राइट तो इससे हम क्या होता है कि वायरस मीडिएटेड या जिसको हम बोलेंगे वेक्टर मीडिएटेड हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं और इंसर्ट कर देते हैं वो जो जीन होता है उसमें ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो है नॉन वायरल या इसको हम बोलते हैं वेक्टरलेस। इसमें हम क्या करते हैं, वी डोंट यूज द वेक्टर्स लाइक वायरस, we use different types of techniques. For example, we can just deliver, there is one method that's called a liposome mediated gene transfer method. The DNA to be transferred is packed in vitro with liposome and used directly for gene transfer to a target tissue in vivo. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हम इन विट्रो पैक करते हैं बाहर लेबोरेटरी में डीएनए लिपोसोम के साथ। एक फैट का एक ड्रॉपलेट होता है, ठीक है, और फैट होता है और लिपोसोम जो होंगे वो कैटियनिक या एनियनिक भी होंगे, और जो एनियनिक लिपोसोम्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं सरफेस पे, और तो डीएनए को अंदर से बाइंड करते हैं। तो जो लिपिड जो है जिसमें अब जो लिपिड कोटिंग allows the DNA to surround in vivo, bind to cells and adhere into sites of the cell। तो यहाँ पे सिंपली हम कहेंगे कि एक जो लिपोसोम है, ठीक है, लिपोसोम जो है इसमें हम लिपोसोम इस्तेमाल करते हैं और लिपोसोम के थ्रू हम उस जीन को सेल में डाल देते हैं, टारगेट सेल में डाल देते हैं, क्योंकि उस लिपोसोम में ही डीएनए पैक होता है ऑन देन इट्स ट्रांसफर। उसके बाद जो और एक मेथड है यहाँ पे इस्तेमाल जो किया जाता है, दैट इज बायोलिस्टिक में क्या करते हैं, हम एक डीएनए कोटेड माइक्रो प्रोजेक्टाइल जो होते हैं, जैसे हम गोल्ड या टंगस्टन को हम उसको कोट करते हैं, फिर उसको हाईली एक्सेलरेट कराते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ हाई वेलोसिटी। हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ हाई वेलोसिटी डीएनए कोटेड प्रोजेक्टाइल्स, माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स बनाते हैं। तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स फिर इसमें डाल देते हैं इनटू द सेल। तो इस तरह से हम सेल में इसको डाल देते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसमें हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे पहले वायरस के थ्रू वेक्टरल मीडिएटेड, उसके बाद नॉन वायरल जैसे लिपोसोम मीडिएटेड या बायोलिस्टिक, या माइक्रो इंजेक्शन भी इसमें आता है। माइक्रो इंजेक्शन जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। दीज आर सर्टेन मेथड्स टू जस्ट ट्रांसफर द जीन इनटू अ डिजायर्ड